So Fermi wave vector for neutron Fermi wave vector is KF1, and that we have derived in previous class, if you remember, that was 3 pi square to the power 1 by 3 into n by v, where n is the number of neutron and v is the volume of sphere. So we can write n as a minus z, right? Because number of neutron is nothing but total mass number minus atomic number, and v is the volume of your nucleus, and that is nothing but 4 by 3 pi r naught cube a, right? Because this is spherical, so 4 by 3 pi r, and r is nothing but r naught to the power 1 by 3. So if you substitute it here, then finally you will get that Fermi wave vector for neutron, that is kf1, and that will be, if you insert these things here, you will get 1 by r naught into 3 square pi divided by 4 the power 1 by 3 into a minus z divided by a the power 1 by 3. Okay, so that main in question CSIR net or GATE, they used to ask that Fermi wave vector, how Fermi wave vector varies with r naught or mass number. So it is clear that kf1 is proportional to 1 by r naught. Also it is inversely proportional to r naught, and also it is inversely proportional to mass 1 by 3, a to the power 1 by 3. So if you know that Fermi wave vector, you can calculate Fermi momentum, right? So Fermi momentum for neutron, it will be simply h cross kf1, right? So all these things will come here, just there will be multiplication of h cross, right? So this everything will come here. Is it clear? So again, you can see that Fermi momentum for neutron inversely proportional to r naught, and also it is inversely proportional to 1 by a to the power 1 by 3. So now can you tell me that what will be the Fermi energy for neutron? How much it will be? So if you remember, in Fermi gas model, there is no interaction between nucleon. So whatever that Fermi energy, that will be simply in the form of kinetic energy. So it will be simply Pf1 square divided by twice into mass of a neutron, right? Because I am calculating it for neutron, so obviously mass will be the mass of neutron. So if you substitute that Pf1 here, you will basically get h cross c whole square divided by twice into mass of a neutron into r naught square. Also you'll get c square here, and you'll get this factor 9 pi by 4 the power 2 by 3, and also you'll get a minus z divided by a to the power 2 by 3. So you can clearly see that Fermi energy for neutron is inversely proportional to 1 by a to the power 2 by 3, and also it is inversely proportional to r naught square. So these are the main factor that you have to keep in mind for exam purpose. Okay. Now same thing will drive for proton. So you see, everything will come similar, just here there will be change. There will be z in place of n, and everything will be similar. So for proton, so let us assume that Fermi wave vector is kf2. So it will be simply 3 pi square to the power 1 by 3, then z by v, right? So again I will substitute v here. So you will get similar kind of thing. That is 1 by r naught into 3 square pi by 4 e power 1 by 3, and also you'll get z by a to the power 1 by 3. Okay.
So similarly, you can calculate PF2 also. You can check. Okay, Yes, sir. that will be H cross PF2, and EF2 you will get similar. Just everything will be similar. Here will be there will be change. So I'm writing that proportional main factor that EF2 will be inversely proportional to 1 by R naught square, and also EF2 will be inversely proportional to a to the power 2 by 3. So whatever you have got for neutron, similar thing you will get. Just you have to change that number of neutron. You have to, for proton it will be Z. Okay, and everything will be same. So main factor is R naught and mass number. How the properties that varies with R naught and mass number. Okay. Hello, sir. So did you finish? Sir, एक minute, sir. Yes. सर फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या लिखा है 3 पाई स्क्वायर है क्या वो Sorry. 3 पाई स्क्वायर है रेज टू 1/3 है क्या First this will be 3 pi square power 1 by 3. That thing we have derived in previous class. Okay. So if you substitute here 4 by 3 pi, you see 1 pi will be cancelled and 3 will come here. So this will be 3 square and 4 will come to denominator. So this like that you will get. Okay. Okay. Sir, so if you, yes. Sir, ये न्यूट्रॉन के लिए KF1 proportional to a to the power -1/3. ये फोन -1/3 नहीं, ए की पावर 2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका मोमेंटम 1 ए की पावर -1/3 एंड ये फोन पीएफ इज ऑन स्क्वायर राइट. Yes sir. नहीं sir, KF1 बोल. के फोन है ए की पावर 1/3 -1/3. Okay. yes. ठीक. यस सर ये जो हमने एनर्जी मोमेंटम निकाला है एक्चुअली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही एनर्जी मोमेंटम है ना सर, फर्मी मॉडल में देख रहे हैं हम उसको. एग्जैक्टली. कौन सा न्यूट्रॉन का देख रहे हैं हम, टॉप मोस्ट लेवल का है ना, at 0 Kelvin you are calculating this right, and you know that exactly जो फर्मी लेवल में जो लाई कर रहे हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके लिए निकाल रहे हैं. ठीक है. हाँ. Okay. Now we'll go to solve this assignment. Okay. So then we'll proceed to an important model that is basically cell model. Every year they used to ask question from there. But before that, let me solve this assignment. Then we'll go there. Sorry, मैं थोड़ा धीरे कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी उतना एफिशिएंसी नहीं है. हाँ सर, ठीक है सर. हाँ, अभी ऑपरेशन हुआ है. सर टोटली फाइन. सर सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है ना सर? हाँ, अभी स्टार्ट हुआ. ओके सर. ठीक है, पहले वाला असाइनमेंट किया हो आप लोगों ने. फर्स्ट प्रॉब्लम कि कौन सा न्यूक्लियर होगा जिसका जो रेडियस है 1/3 टाइम ऑस्मियम. ठीक है, वेरी सिंपल राइट. हाँ, सो ये करने का ऐसा जरूरत नहीं है, सब लोगों ने किया होगा ना. हाँ आ गया था समझ में सर. हाँ, वो सब वेरी सिंपल है. सेकंड कि अगर अर्थ कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मैटर है तो फिर उसका रेडियस क्या होगा. अर्थ का आपका मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है अगेन. ठीक है, तो रो इक्वल्स टू क्या है, m/v है. ठीक है, तो v इक्वल्स टू m/ρ. ओके, एंड v इज स्फेरिकल राइट. सो 4/3 pi r cube equals to mass 6 into 10 to the power 24 divided by density is given 10 to the power 17. So from here we'll get radius. R cube will be 3 by 4 pi into 6 into 10 to the power 24 divided by 10 to the power 17. So if you calculate it, you'll get R cube equals to
1.43 into 10 to the power 7. Okay, obviously that unit will be meter cube. So R will be how much? It will be on 14.3 to the power 1 by 3, and also there will be multiplication factor 10 square in meter. So you just calculate how much it will be, 14.3 ka power 1 by 3. So calculate karoge, but main motivation is if Earth consists of nuclear matter, its radius will be only of the order of 100 meter. Okay, ये आप कैलकुलेट कर लेना. मेन मोटिवेशन यही है कि Earth अगर न्यूक्लियर डेंसिटी होता कितना छोटा हो जाता है ना. थर्ड प्रॉब्लम, इसमें आपका रो गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. देखिए ये भी बहुत सिंपल है, क्वांटम मैकेनिक्स का है. तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपका, रो गिवन है न्यूक्लियस का. रो ऑफ आर is rho naught when r is smaller than equals to r, and that rho is 0 obviously when r is greater than capital R. So you have to calculate it expectation value of r square. It's a very simple question if people learn in quantum mechanics. So it will be basically nothing but r square rho r, and obviously that it will be volume element, d tau will be the volume element, and there will be of course a normalization factor, that will be rho of r into d tau. Okay, now d tau is a spherical polar coordinate, obviously r square sin theta dr d theta d phi. So if you substitute it, so r is only, rho of r is only valid up to capital R. So I'll take that dr limit 0 to capital R, theta limit will be 0 to pi, phi limit will be 0 to 2 pi, and it will be r to the power 4 sin theta, and it will be rho naught dr d theta d phi. Okay, so r to the power 4, how it came, because here from here you will get r square, right? So r square into r square, r to the power 4, and similar thing here you will get simply same limit 0 to r, 0 to pi, 0 to 2 pi, rho naught r square sin theta dr d theta and d phi. Okay, Yes. if you calculate it, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, देखो तो 3/2 r square. exactly, very good. So it will if you calculate it 3 by 5, right? Because Yes. you see these are all are common. It will give you 4 pi rho naught. Here also you will get 4 pi rho naught. Just आपका r स्क्वायर का इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो फर्क पड़ेगा. तो यहाँ से r to the power 5 by 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका r to the power 3 by 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. और there will be of course r to the power 4 5 here r की power cube, so r square will be there. So we will basically get 3 by 5 capital R square. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ. अभी जो फर्मी गैस मॉडल का जो किया है ना उसके बेस में है क्वेश्चन. A to the power -1/3. एग्जैक्टली. सो फिर मीन मोमेंटम बोले है ना, तो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है, कितना नंबर है? हाँ, फोर्थ नंबर. तो इसमें क्या है, मीन मोमेंटम बोले हैं, और मीन मोमेंटम आल्सो प्रोपोर्शनल टू पीएफ. ओके, सो आप लोगों ने पढ़े हो mean energy, mean momentum in condensed matter physics when you will go for that free electron theory there also, density of state सोमरफेल्ड मॉडल में. तो ये जो है आपका मीन मोमेंटम बेसिकली कितना होता है वो मैं लिख देता हूँ, जैसा डेफिनेटली पढ़ाया होगा आप लोगों को. ये 3/4 पीएफ होता है. तो मेन फैक्टर ये है मीन मोमेंटम, हाउ इट varies with mass number. So if mean momentum is proportional to pf, and obviously you know how pf is varies, तो mean momentum क्या हो जाएगा, inversely proportional to a की power 1/3.
ये भी बहुत सिंपल है, मीन मोमेंटम वाला, पांचवा, सॉरी मीन एनर्जी वाला। हाँ, सो इट विल बी बेसिकली a की पावर 2/3, राइट, बिकॉज जस्ट p स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3। ओके, हेलो सर। हाँ यस, सर जरा प्लीज बताएंगे पीएफ क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। हाँ पीएफ, ये आपका पीएफ अभी डिफाइन किया था हम लोगों ने फर्मी गैस मॉडल में, वी हैव डिराइव्ड, राइट, हाउ पीएफ इज वेरीज विथ mass number. It was, if you remember, just few minutes back I have derived. It was like a की power 1/3 and 1/r0, right? So mean momentum is proportional to pf. हमेशा ध्यान देना, मीन मोमेंटम मतलब आपका पीएफ था टॉप मोस्ट लेवल का मोमेंटम, सारे लेवल का अगर आप जोड़ोगे तो ऑब्वियसली इट विल कम लेस, राइट, दैट्स व्हाई 3/4. And these things we have, if you remember, that JEST will have derived, I don't know whether you gone through or not, he will derive, because there is a concept of density of state here, he will derive. Yes, sir. Okay, also that energy will be proportional to EF, average energy. तो ये बहुत सिंपल है, बट इसमें से क्वेश्चन आप, हाँ ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी तो कर सकते हैं। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी आप कर सकते हो, वेरी गुड, आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ, कैसे करोगे आप लोग बताओ। According to Heisenberg uncertainty principle, the kinetic energy of confined electron, the kinetic energy of a confined electron और confined region का volume given है, ठीक है ना, and that region is obviously spherical. तो कैसे करोगे, पहले उसका ये निकालो, साइज रेडियस निकालो, तो वॉल्यूम गिवन है, हाँ रेडियस के बाद मोमेंटम निकालेंगे और p²/2m करके। वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से करना है तो ऑब्वियसली आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। पहले आप साइज निकालो, तो 4/3 वॉल्यूम गिवन है, तो 4 स्फेरिकल रीजन है, ऑब्वियसली 4/3 r³ एंड दैट इज बेसिकली 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आपका r आ जाएगा, r कितना आ जाएगा, 0.62 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओ, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h क्रॉस। ओके, तो यहाँ से आपका डेल्टा p मिल जाएगा, तो डेल्टा p ऑन h कैट इज हाउ मच, 1.05 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई डेल्टा x, and then delta x obviously of the order of delta x should be r, and r is, we have calculated, that is 0.62 into 10⁻11. Okay, so if you calculate it, you'll get delta p equals to 1.69 into 10⁻23, okay, in SI unit. Okay, now you can calculate that momentum, right? Sorry, kinetic energy. So kinetic energy will be how much? P delta p square by 2, मास किसका होगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन का, राइट, इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका वैल्यू 1.69 इंटू 10⁻23 स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई 2 इंटू 9.1 into 10⁻31. Okay, so if you calculate it, you will get 1.57 into 10⁻16 in joule. Okay, next problem, कि दो न्यूक्लियन के बीच में अगर एक्सचेंज पार्टिकल पायोन है तो उसका रेंज गिवन है 1.40. ओके,
नाउ अगर आपका एक्सचेंज पार्टिकल चेंज होकर रो मेजॉन हो जाएगा, रो मेजॉन का मास कितना गिवन है 770 MeV पर स्क्वायर, तो उसके लिए आपका हाउ मच विल बी द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स? So obviously that range is inversely proportional to mass of exchange particle. You remember? सबको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट? जो आपका रेंज होता है न्यूक्लियर फोर्स का, वो आपका एक्सचेंज पार्टिकल का मास के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट फॉलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो आपका मास की इसका गिवन है सर, ये एक बार बता दोगे ये कॉन्सेप्ट? एग्जैक्टली, आई टेल यू। सपोज दो आपका न्यूक्लियन है, ये प्रॉब्लम नंबर कितना है? 7। सपोज मान लो आपका दो न्यूक्लियन है N1 N2, ठीक है। तो कैसे इंटरेक्ट करता है? यहाँ पे एक एक्सचेंज पार्टिकल सपोज मान लो इमिट हुआ है, एंड दैट विल रिसीव बाय दिस न्यूक्लियन। सो न्यूक्लियन ऑन emit on exchange particle, let us assume this mass is MEX. So after time delta t, this N2 receive this exchange particle. So what will be the range? Range will be simply after time delta t it received, so C into delta t, that will be range. Okay, so I'm assuming that the speed of this particle is C because mass is so small. And we also from Heisenberg uncertainty principle, you can say delta E into delta T equals to of the order of H cross, right? And delta E is nothing but, so again it follows energy conservation. So when it lose that exchange particle, so it will basically lose delta E energy, and after time delta T, this energy is gained by this particle. So whatever energy lost, it should conserve within time delta t. So delta E will be how much? Basically mass of exchange particle into C square, and this is delta t, and that will be H cross. So here, from here you will get delta t inversely proportional to mass of exchange particle. So if you substitute delta t here, obviously that range will be 1 by mass of exchange particle. Okay, is it clear? यस सर। हाँ, तो अगर रो मेजॉन का सॉरी पाई मेजॉन का मास गिवन है, एम पाई कितना गिवन है 140, राइट? 140 MeV पर C स्क्वायर। इसका रेंज कितना है? आर पाई 1.40 फेम्टोमीटर। Let us assume mass of rho meson is m rho, and that is given 770 MeV per C square, right? Am I correct? 770 given, right? Okay. So what we can write? So we have to calculate that range for rho meson. Okay, that we have to calculate. So we can write R pi inversely proportional to mass of a pi meson, and let us assume this is your equation number 1, and R rho inversely proportional to mass of rho meson, and that is let us assume equation number 2. अगर 2 से on को divide करोगे, if you divide it, you will basically get mass or range of for rho meson, that will be range for pi meson into mass of pi particle pi meson divided by mass of rho meson, and everything is given. So this is given 1.40, right? And this is given 140 divided by 770. So if you calculate on that unit, obviously it will be in femtometer, because this MeV per C square will be cancelled with this unit, right? Mass unit. So if you calculate it, you will get 0.25 femtometer. Okay. Okay. Now ये वाला बताओ आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर कैसे करोगे? फर्मी वेक्टर गिवन है for a nucleon having mass
Fermi momentum by mass. Exactly, you can do that. So 8 number, right? So PF will be how much? H cross KF, right? Is it Yes, clear? sir. So KF is given, right? So how you can write? We have to calculate corresponding velocity. Velocity means that nucleon velocity, that is actually Fermi velocity, because that nucleon is basically lying in that, according to this question, that is at Fermi level. So PF will be how much? Mass of nucleon into VF, and that will be H cross KF. So VF will be how much? H cross KF divided by mass. Now you see, basically they ask in numerical, not like in unit. So you have to convert it. How will convert? Basically, if you multiply H cross C into KFC divide by, you can write M into C square, right? And you, how much is the value of H cross C? Anyone? How much is the value of H cross C? So if you remember, that is 197 MeV femtometer, right? And that Kf is given. Kf is how much? 1.40 FM inverse, right? Is not it? 1.40 femtometer inverse into C. Divide by, this will be how much? Mass of that nucleon, that is given 939. Okay, that FM inverse, that will be cancelled with this FM. So if you calculate it, and also here you will have unit. What will be the unit? MeV per C square. There is one C square here. That will be cancelled, and this MeV will be cancelled. So whatever unit will be in the form of C. So if you calculate it, you will get 2.29 C. Okay. So in that question, actually this is, I think, TIFR question. So they ask this value in the form of, in the factor of C. Okay. So you have to remember this thing, H cross C. How you can write this in the form of MeV femtometer. Okay. So they ask in that question V in the form of C. 9th वाला तो बहुत इजी है, आप लोगों ने किए हो. Have you done this question? 9th कैसे करोगे 9th वाला? So alpha particle. formula हाँ B का formula. एग्जैक्टली, वो बहुत सिंपल है आपका. 9th वाला मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना है. तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी will completely convert into potential energy, right? And potential energy will be how much? Q1 Q2 by R square, right? So let us assume that Z1 is the atomic number of alpha particle, Z2 is the atomic number of gold, and obviously there will be square divided by 4 pi epsilon naught into R naught. Let us assume that R naught is the distance of closest approach. So from here you can calculate R naught will be, Z1 is 2 for alpha particle, Z2 is obviously 79 for gold, E square is 1.6 into 10 to the power minus 19 square divided by also 4 pi square. 4 pi square, you know that value, 9 into 10 to the power 9, right? And on MeV, that kinetic energy of alpha particle is given, so it will be 10 to the power 6 in EV, and you can convert it into joule, so it will be 1.6 into 10 to the power minus 19. So if you calculate it, R naught you will get 2.27 into 10 to the power minus 13 meter. Okay. Now ये वाला क्वेश्चन बताओ आप, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ. So for a family of isobars with mass number is given,
तो आपको ये देखो मास नंबर क्या गिवन है, ऑड नंबर मास, तो एटॉमिक नंबर आपको निकालना है फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोमर। कैसे करोगे? सो ऑड मास के लिए अगर आप रिमेम्बर करोगे, जब हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ रहे थे, सेम दैट मास पैराबोला, दैट टाइम आई हैव ड्राइव्ड फॉर्मूला फॉर ऑड मास नंबर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर कितना होता है, माइनस बीटा बाई 2 गामा, इफ यू रिमेम्बर। याद है कि अगर ऑड मास नंबर है, मास पैराबोला में हम लोग इसको ये किए थे, फॉर्मूला को डिराइव किए थे। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। तो ये ऑड मास नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 1 8 9 10, राइट। जेड नॉट विल बी माइनस बीटा बाई 2 गामा, एंड बीटा कितना था आपका जो हम लोगों ने डिराइव किया था, -4 इंटू एसिमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस mn minus mp. Okay, then there is AC divided by, AC means Coulomb coefficient, divided by a की power 1/3. Okay, and everything is given, that coefficient also given, 4 into asymmetric coefficient is given 19, right? mn minus mp, if you see the data, that will be 0.8. AC is given how much, 0.595, divided by a की power 1/3. A is mass number 1/3. So if you calculate it, you will get minus 77 MeV approximately. And gamma was defined, gamma was how much, 4 asymmetric coefficient divided by mass number plus Coulomb coefficient, mass number a की power 1/3. Now again, if you substitute this coefficient, 4 into 19 divided by 91 plus 0.595 divided by 91 की power 1/3. Okay, so if you calculate it, you will get 0.96, okay, in MeV. Okay, so Z नॉट कितना हो जाएगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, 77 डिवाइड बाई 0.96, 40 क्या अराउंड आएगा। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बताओ कि बीटा माइनस इमिशन में कितना एनर्जी रिलीज होगा एंड बीटा प्लस इमिशन में कितना एनर्जी रिलीज होगा। कैसे करोगे, ये भी हम लोगों ने ड्राइव किया था, है ना, अगर याद करोगे, 2 गामा जेड नॉट माइनस जेड माइनस हाफ, राइट। सो बी पार्ट 10 का बी पार्ट कैसे करोगे, तो बीटा माइनस इमिशन के लिए एनर्जी रिलीज क्यू बीटा माइनस, एंड दैट इज इफ यू रिमेंबर 2 गामा जेड नॉट माइनस जेड minus half. So for each beta minus emission, that much energy will be released. Now Z naught you have defined. So how will be the Z? How will be the Z? Z will be how much? So Z naught is 40. So for beta minus अगर याद करो, जब हम मास पैराबोला डिफाइन किया था, तो कहाँ से बीटा माइनस इमिशन होता था, इधर से, राइट, राइट, हाँ एग्जैक्टली। सो इधर से ये आपका Z नॉट है, ठीक है ना, इधर से जो इमिट होता है बीटा माइनस इमिट होता है, क्योंकि हर सिस्टम क्या, एवरी सिस्टम ऑन टू स्टे इन ग्राउंड स्टेट। तो इधर आपका मास था, तो मिनिमम मास में तो सबसे स्टेबल है, तो इधर जितना सारे आपका न्यूक्लियर लाई करेगा वो आपका बीटा माइनस इमिशन करके मोस्ट स्टेबल होना चाहते हैं। इधर क्या होगा, क्योंकि बीटा माइनस इमिशन में क्या होता है, आपका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जेड से जेड प्लस ऑन हो जाता है, इधर से क्या हो जाएगा, आपका बीटा प्लस इमिशन होता है। वजह से क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर घटता है, यहाँ से एक से दूसरा में आ जाएगा, तो जेड से जेड माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जेड बेसिकली बीटा माइनस इमिशन में कितना होता है, 39 हो जाएगा, क्योंकि इधर है जेड नॉट के, इधर है 39 हो जाएगा माइनस हाफ। तो आपका कितना हो जाएगा बेसिकली
0.96. ठीक है, बीटा प्लस में कितना हो जाएगा फॉर्मूला 2 गामा z minus minus z0 minus half. Okay, so it will be 2 into 0.96. This will be 40 on minus 40 minus half. So again it will be 0.96 MeV. Next, the quadruple moment of ZD is 130 FM square. तो इसको प्रूव करना है कि आपका जो ये है इसका शेप है ऑलमोस्ट स्फेरिकल है. ठीक है, तो कितना नंबर है ये? Sir, हाँ, sir, assignment you have given in the group. yes, Okay, sir. you have not received. Actually, I was busy, so I have seen it now. Okay, okay, okay. Okay, sir. Actually, whatever we have discussed till now, based on this, I have derived, and also previous classes, I told, right, we'll do on assignment. That day I prepared assignment, and unfortunately something happened. Okay, next question. So quadruple moment. So quadruple moment, basically these things I'll discuss in detail in cell model, because in every time in basically in question they used to ask nuclear properties, and main properties like angular momentum, then you have seen parity, quadruple moment, magnetic moment, everything basically derived from your cell model, right? I'll take at least 2 classes there, but in previous class I have discussed this quadruple moment little bit. I'll use this formula basically. So that is for 4/5 z r square delta r by r. So r is the radius and delta r is the deviation. So if this parameter delta r by r is very small, then you can say that shape is spherical, because when that shape is deviated from spherical to prolet or oblate, delta r will be r large, because r is nothing but b minus a. Okay, b means you have that along y-axis, along x-axis that length. So if delta r by r is small, then you can say that shape is almost spherical. If delta r by r is large, then that shape will not be spherical, and everything is given here. So I'll use this whatever parameter they have given, that is 130, right? And here this side you have 4/5 z. Z is how much? 64 for GD. R is R naught at a ki power 1/3. R naught is given 1.2. A ki power 1/3. A is 155, right? And obviously there will be square. And delta R by R. Okay. So if you calculate delta R by R, if you calculate, it will be very small. I have calculated it. It will be around 0.05. So it's very small. Okay. So we can say that shape is spherical. सर Yes. सर जब हमने क्वाड्रपल मूवमेंट पढ़ा था तब हमने बोला था q की वैल्यू 0 होगी तब स्फेरिकल होगा. Almost spherical. Almost मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, You are very correct that q obviously आपका जो है ये है 0 होना था ना, बट यहाँ पे क्या है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है. हाँ हाँ, so this is not exactly spherical, this is almost spherical, and these things actually
evidence of evidence of that nucleus has cell structure, because all magic number that will have that quadrupole moment 0, and that is because they are spherical in shape, and this is not exactly spherical, this is almost spherical. So if you calculate for ideally for spherical exact for ideal sphere, delta r by r should be 0. तो आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया हूँ, बस इसके बेस्ड में अगर क्वेश्चन आए, यू आर करेक्ट, and that thing we will calculate also when we will go to cell model. Okay, next problem बताओ. ये वाला क्वेश्चन अच्छा है. ये वाला बताओ कि आपका दो ड्यूट्रॉन जो है कॉम्बाइन होकर आपका हीलियम बना रहा है, एंड उसका मास गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है. ओके, तो आपका दो ड्यूट्रॉन है. सर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे. एग्जैक्टली, तो मास डिफेक्ट ये 12 नंबर है ना. OnH2 प्लस OnH2 ये मिलके आपको बना रहा है हीलियम 4, राइट. तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो, है ना. वहां से आपका बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा. तो बाइंडिंग एनर्जी B डॉट E दैट विल बी मास डिफेक्ट डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर. मास डिफेक्ट मतलब इनका इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये है 2 डॉइट्रियम, राइट. तो हम क्या लिखेंगे मास डिफेक्ट के जगह पे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, so mass of basically mass of twice mass of deuteron, right, because A इसका constant है minus mass of helium. Okay, and there will be C square. Okay, so how much is given? Mass 2.01355 U, right. Then this is given 4.0026 U. Okay, C square. Now U के जगह पे हम क्या लिखेंगे? We know one atomic mass unit is 931.5 MeV per C square. Okay. तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को. ठीक है, एंड सी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड. इफ यू कैलकुलेट इट, इट विल गेट 22.82. सो दे बेसिकली आस्क बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम का. तो बाइंडिंग न्यूक्लियन में कितना हो जाएगा, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गया. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली it will be 22.82 divided by 4. Okay, so this will be 5.7 MeV. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. कार्बन 12 कंबाइन विथ न्यूट्रॉन टू फॉर्म कार्बन 13. बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन का कितना है पूछे. ये भी इस तरह का ही है ना. ये भी बहुत सिंपल है. हाँ हाँ, तो ये करने का जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली यहाँ पे कार्बन 12 लिखो, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखो, फिर आपका बनाएंगे कार्बन 13. तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन का पूछे, तो एग्जैक्टली मास डिफेक्ट, मास ऑफ कार्बन प्लस नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ कार्बन 13. ओके, एंड एग्जैक्टली सेम वे इफ यू कैलकुलेट विल गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 14 कैसे करोगे इसको. कैसे करोगे 14 को. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गिवन फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट. And they ask that binding energy difference between these two nuclei is complete because of that Coulombing tub. Okay, then what is the radius of nitrogen, they have asked. So first binding energy का difference लिखो, कितना आएगा दोनों का. right. So binding Yes. energy is, suppose मान लो न्यूट्रॉन का सॉरी आपका सपोज मान लो नाइट्रोजन का EB ऑन है,
और आपका ऑक्सीजन का EV2 है, and let us assume that difference between these two binding energy is delta EV. Okay, so how much will be this factor? So basically this will be 3 by 5 E square by 4 pi epsilon naught into Z minus Z into Z minus 1 is given, right? So this is, let us assume this is EV2. EV2 is the binding energy, sorry, EV1 is the binding energy of nitrogen, and this is binding energy of oxygen. And they ask that binding energy difference is completely due to Coulombic term, and Coulombic term form of this Coulombic term is given. So if you make this difference, you will get, basically we know that Coulombic term is negative in nature, right? So EV1 minus EV2 will be definitely that Z factor will come for oxygen first. It will be Z is given for oxygen is 8, and Z minus 1 will be 7, and this will be for nitrogen 7 into 6. Okay, so this difference, this let us assume this is your, and also I forgot to mention R. There will be R factor here. Okay. So Yes. if you calculate that delta EV, it will be how much? 3 by 5 E square by 4 pi epsilon naught is given value. How much it is given? 1.4, right? 1.44 mega 1.44 mega electron volt femtometer. Okay, and this factor is how much? 56 minus 42. How much? 14, right? 14, right? Yes, sir. Okay. So this is your first equation. Second equation, how will you calculate? You can calculate for for neutron, sorry, nitrogen, that 715, right? 715 is given, right? Yes. How will you calculate this binding energy for this nitrogen? You can calculate it, right? Because mass parameter, from mass parameter you can calculate. So let us assume this is EV1. So how much it will be? So So ZMP minus here that atomic mass is given. So you can write Z is how much? M hydrogen, sir. Mass of hydrogen, right? Plus 8 into mass of neutron, right? Then you have atomic mass of nitrogen. Now बताओ कितना गिवन है सारे, ये तो हमको पता है. 7 into 1.0078, right? Is it mass of hydrogen? Yes. Then you know obviously that unit will be atomic mass unit. Then you have 8 times mass of neutron, that is 1.00866 atomic mass unit, minus, and there will be C square factor here. Okay, this nitrogen का कितना given है atomic mass? कितना given है? हाँ, 15.000109. 15.000109. Okay, into C square. ठीक है. Similarly, you can calculate EB2. EB2 for oxygen. Okay, so if you calculate it, EB2, it will be 8 into 1.00782 atomic mass unit, 7 times mass of neutron, 1.00866 U, minus how much it is given? 15.003006. 306. Okay, U.
इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा ई भी कैलकुलेट करो। कितना आएगा? इसको डिफरेंस अगर करोगे दोनों को, माइनस EV2, okay, so you will get basically double zero, sorry, 0.0037 into U. U is how much? 931.5. Okay, and that unit is MeV. ठीक है, तो एक आपका डेल्टा ई भी यहाँ से आया है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मानो और ये आपका सेकेंड इक्वेशन मानो, और फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर करो आप। ओके, फर्स्ट और सेकेंड का अगर कंपेयर करोगे तो फिर आपको यहाँ से, अच्छा यहाँ पे आपका आर मिसिंग है ना, आर, देयर इज आर, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा ई भी कितना था आपका? 3/5 इंटू 1.44, राइट? Yes, sir. 1.44 हाँ, 1.44 into 14 by R. into 14, okay, and that unit is MeV FM, M2. and that is your 0.0037 37 into 931.5 MeV. 931.5 MeV. So this MeV will be cancelled. Okay, if you compare, if you calculate from here, you will basically get how much? 3.42 femtometer. I think this is a very good question. The two concept you have to remember. One is that liquid drop model, and another is basic concept of binding energy. Okay. Next question बताओ कैसे करोगे? सो आपका न्यूक्लियर मास इसका गिवन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का गिवन है, कूलॉम कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? सर बाइंडिंग एनर्जी निकल कर, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी निकल के, बट एक आपका न्यूक्लियन का मास भी आएगा, एक मिनट में बता देता हूँ, आप लोग कर लेना इसको, मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, बिकॉज एक और क्वेश्चन है मैं आप लोगों को भूल गया था, वो भी करना है। हाँ, तो जैसे आप मास लिखोगे according to that semi-empirical mass formula, so mass for, let us assume for oxygen means for these two nuclei, if you see oxygen का आपका atomic number Z+1 है, mass number is A, so Z+1 means 8, and for that A is 15, तो इसको कैसे लिखोगे आप? ZMP plus, sorry, यहाँ पे not Z, it will be Z+1, right? 1 plus यहाँ पे क्या लिखोगे आप? A A minus minus Z+1, Z+1 Mn, ब्रैकेट आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी वॉट एवर यू हैव डिस्कस, सो फर्स्ट टर्म इज AVA, ठीक है, देन यू विल हैव AS A की पावर 2/3, देन यू विल हैव AC Z, सॉरी यहाँ पे Z+1 Z+1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, A की पावर 1/3, राइट? Yes. देन यू विल हैव A minus Z+1 स्क्वायर डिवाइड बाई A, राइट? ये भी प्लस है ना, Yes, ठीक है ना,
एंड लास्ट टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये आपका ऑड न्यूक्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट Yes. इक्वेशन है, और ये आपका किसका मास है, ऑक्सीजन का मास। सेकंड जो आपका इसके लिखी नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का जेड मानो, मास नंबर इज सेम, so it will be Z into MP, okay, A minus Z, okay, mass of neutron minus this factor will be same, AVA, then you will have AS A की power 2/3, ठीक है, then you will have AC Z square divided by A की power 1/3, then A minus Z square divided by A, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। सो एक को दूसरे से ये करो, सब्सट्रैक्ट करो। So if you make A minus, sorry, 1 minus 2, so how much you'll get? So remember, this is a mass of oxygen, this is mass of nitrogen. So if you make this difference, तो देखो आपका ये भी ये तो टर्म खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट जो एसिमेट्रिक टर्म है ये भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि A minus Z plus 1, Z कितना है आपका, Z plus 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 है। तो 8. हाँ, यहाँ से A minus, सॉरी यहाँ पे A minus 2Z हो जाएगा ना, ये लास्ट टर्म जो है यहाँ पे बेसिकली ये आपका A minus Z नहीं, A minus 2Z है, राइट। सर हाँ सर ये एक्सप्रेशन हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का लिख रहे हैं ना सर? हाँ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। हाँ सर, टर्म्स ऑफ हाँ सरफेस वॉल्यूम एंड एग्जैक्टली, तो ये आपका जैसे आपका मास लिखोगे तो मास कितना हो जाएगा, जो आपका प्रेडिक्टेड मास माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी था, ठीक है ना। बट लास्ट टर्म में मैंने मिस्टेक किया हूँ, उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। जो एसिमेट्रिक टर्म है ना उसमें A minus 2Z होता है ना। सो इट विल बी बेसिकली A minus 2 into Z plus 1 स्क्वायर डिवाइड बाई A, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाए, हो जाएगा A minus 2Z, ठीक है ना। तो देखो A minus 2Z plus 1 कितना आ जाएगा यहाँ से, फॉर ऑक्सीजन इट विल कम -1 स्क्वायर मतलब +1, A इज सेम फॉर बोथ। यहाँ से कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन के लिए -2Z 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो थर्ड लास्ट टर्म है ये भी सेम है। तो वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म और ये टर्म जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। यहाँ से जो आपका प्रेडिक्टेड मास है, यहाँ से बेसिकली आपका जेड एम पी A minus Z Mn कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे Z plus 1 था ऑक्सीजन के लिए, तो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, चेक कर लेना आप लोग, mZ plus 1 A minus mZA तो करोगे तो आपको बेसिकली MP minus Mn, ठीक है, फिर आपका टर्म आ जाएगा AC डिवाइड बाई A की पावर 1/3 इंटू Z plus 1 स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, ठीक है। ये मास गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है, ये भी गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी गिवन है। ये कितना है, A की 15 की पावर 1/3, Z plus 1 मतलब ऑक्सीजन का है 8 स्क्वायर, Z स्क्वायर मतलब नाइट्रोजन का है 7 स्क्वायर। तो एवरी पैरामीटर इज गिवन here, so from here you can clearly calculate that AC. I'm writing, but you people please calculate it. I'm writing that value. कर लोगे राइट, कुछ नहीं है इसमें। ऑक्सीजन का Yes, मास sir. बैठा था, हाँ, फिर आपका नाइट्रोजन का, प्रोटॉन का बैठा दो, है ना। तो बेसिकली यू विल गेट इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास, राइट। तो फिर बात आपको ये बेसिकली पूछा गया है MEV में, तो एटॉमिक मास से MEV का आराम से कर सकते हो, जस्ट 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू कैलकुलेट इट AC, आई एम राइटिंग दैट वैल्यू, इट विल बी अराउंड 0.66 MEV, ठीक है। आप लोग, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी तो आप कर लोगे, आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है। जरा आपको प्रोसेस जानना जरूरी है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो,
in a deep in deep elastic scattering, electrons are scattered off to determine if proton has any internal structure. In a deep elastic scattering, electrons are scattered off to determine if protons has any internal structure. Calculate the energy of electron carried. Calculate the energy of this electron. So can you just repeat once more? Yes, yes. In In a deep elastic scattering, electrons are scattered off to determine if proton has any internal structure. Calculate the energy carried by this electron. so after electrons are scattering, sir. In deep elastic scattering, electrons are scattered off to determine if proton has any internal structure. Full stop. Calculate the energy carried by this electron. तो प्रोटॉन का अगर if you want to calculate that internal structure of proton, then wavelength of this electron should be of the order of the size of proton. Okay, so let us numbering it. This is 16 number. So size of proton is how much? So it is basically of the order of femtometer, right? Yes, sir. Meter, right? Because how will you know? R is R naught a की power 1/3. So if you take only one proton, one proton is there, so mass number will be 1, right? And R naught is of the order of femtometer, right? So basically you will get the size of proton is 10 to the power minus 15 meter, right? Now the wavelength of electron should be in this range, right? So lambda should be equals to how much? 10 to the power minus That's 15 meters. 15 meter. So you can write it 10 to the power minus 5 angstrom, right? Yes, And we know that lambda is how much? H by root over 2me, right? yes, sir. Okay. So m is the mass of electron, energy is the energy H, you know. So if you substitute that H, mass of electron, and when the energy of electron is in the in unit of eV, then you will get that wavelength in the unit of angstrom. So basically, if you substitute this value, so what you will get basically lambda in angstrom will be 150 divided by energy when energy is in eV. इसमें रिपीट करने का जरूरत है हो तो बताओ. ये क्लियर है आप लोगों को? लैम्डा इक्वल टू h बाई p is रूट ओवर 2me. अगर h सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन ईवी में है, तो बेसिकली अगर ईवी से अगर आप क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना? तो जूल में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? 150 इंटू क्या मिलेगा? एक 10 की पावर माइनस 10 मिलेगा. तो 10 की पावर माइनस 10 को हटाओगे तो ऑब्वियसली लैम्डा विल बी इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के लिए. समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल लो. So you will be how much? 150 divided by lambda square, and lambda you know. Okay, so 150
divide by 10 की power minus 5, right? So it will be basically of the order of 10 की power 12 eV. ऑर्डर में लिख रहा हूँ, फैक्टर भी आएंगे, है ना, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो now I should stop here. Okay, tomorrow we'll discuss about that cell model, and that is basically very important part, because एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे वहाँ 5 नंबर का, ठीक है। Yes, sir. So I should stop here. Okay. 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 Good night.